Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and best wishes कि आप लोग fit रहें, healthy रहें, and we keep on doing classes. But I miss you guys and I really want कि हम लोग we can have a face-to-face class, a physical normal class. Let's see how long we are going to conduct session like this. But in today's class we'll try to cover the entire concept of profit statements under the principle of marginal costing and absorption costing. In the last two classes, we are discussing the same concept. It was a lengthy concept. In the last class, we were able to finish preparing profit statement under absorption costing. थोड़ा सा हम आज इसको recall करेंगे, revise करेंगे. We'll try to distinguish again between margin and absorption. And the concepts which are left are the reconciliation statement and why the profit under marginal and absorption are different. And in what cases profit of marginal would be higher, in which case absorption का profit higher होगा, किस तरह से आपस में profits को reconcile कर सकते हैं, किस condition में दोनों का profit would be same. So we'll continue in today's class the same concept which we were studying in the last class. The duration would be 50 minutes to 1 hour, and after that we'll have a question answer session. If possible, we'll also try to solve one of the questions from the past papers. So you should also be having your section B along with you. Please keep section B along with you. Let's start with the work, guys. So, 2 days earlier, we started this particular concept of profit statement where we discussed that profits can be calculated, presented in two different costing modules and systems. One is called the marginal costing system and the other is called the absorption costing statements. Marginal costing means variable costing, and marginal costing tool is used by internal management for decision making purpose. Absorption costing is total costing, it's full costing. Total costing भी हम कहते हैं, absorption costing is also called full costing. Absorption means total, absorption means full costing, and these are external reporting statements. Whenever we are performing accounting from the perspective of absorption costing, these are prepared for external reporting purpose. And even as per IS2, inventories valuation is always based on absorption cost. The main difference between the two profit statements is the difference of inventory valuation. I repeat, the main difference between the two statements are actually the difference of inventory valuation. अगर दोनों statements के अंदर हमारे पास कोई opening या closing inventories नहीं होगी and production would be equal to sales, then if you calculate the profit under marginal or absorption, the profit is always going to be the same. But whenever there is a difference, whenever there is opening and closing inventories given, under absorption, we perform a different valuation for inventory, and in marginal, we perform a different valuation of inventory. So just to summarize and recall, variable cost statements में हम लोग हमेशा अपनी inventory को variable cost of production के ऊपर value करते हैं. The cost which is variable by behavior and by function, it is a production related cost, and it may include components like material, direct labor, direct production expenses, and variable production overheads. Absorption costing means full costing, total costing. Therefore, in absorption costing, inventory valuation is based on total cost of production. And when we say total cost of production means it include the variable cost of production as well as the fixed cost of production. Non-production cost को कभी भी हम अपनी inventory valuation में include नहीं करते. But to add fixed production overheads to inventory valuation, we use the overhead absorption rate, overhead recovery rate, which is calculated as overheads, fixed production overheads divided by normal or budgeted production level. Under the statement of absorption costing, we need to show gross profit, which is sales minus cost of sales. And after the gross profit, we deduct the non-production expenses, which may be fixed or variable, to get to the amount of net profit.
In marginal costing, we show the contribution, which is sales minus total variable cost. We get to the contribution, and contribution minus total fixed cost, which may include production related fixed costs and non-production related fixed costs, to get to the amount of net profit. उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि यार फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का रिकवरी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. And whenever there is a difference in volume, whenever there is a change in volume between actual production level and budgeted production level, it can lead to over and under absorption of overheads. Overactivity, which means whenever our actual production level is higher than budgeted production level, overactivity will always lead to over absorption. Underactivity will always lead to under absorption of overheads. That means activity का over and under absorption से direct relationship है. Activity ज़्यादा होगी over absorption, activity कम होगी under absorption. And over and absorption, under absorption calculate करने के हमने दो techniques, दो methods भी देखे थे. One is that you calculate your overhead absorption rate and then multiply this overhead absorption rate with actual activity to calculate the overhead absorbed. And once we have overhead absorbed, हम उसको अपने overheads के साथ, actual overheads के साथ compare करके over and under absorption calculate कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि you compare your budgeted production level with your actual production level to determine overproduction or underproduction, and then multiply that over or underproduction with overhead absorption rate. You will be able to calculate the over and under absorption of overheads. उसके बाद हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी डिस्कस किया. लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट में आएगा. मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट में देयर इज नो ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट. ओवर एब्जॉर्प्शन मींस कॉस्ट को हमने ओवर चार्ज कर दिया है, ओवरस्टेट कर दिया है. और जब हम कॉस्ट को ओवरस्टेट करते हैं तो प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड. तो रेक्टिफाई करने के लिए या तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ओवर एब्जॉर्प्शन को माइनस करेंगे, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम इसको एडजस्ट नहीं कर रहे तो हम ओवर एब्जॉर्प्शन को अपने ग्रॉस प्रॉफिट में क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे. अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को अंडर चार्ज किया हुआ है, अंडर रिकॉर्ड किया हुआ है, और अंडर रिकॉर्ड करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाता है. अब यहाँ पर भी दो ट्रीटमेंट्स हैं कि either we deduct the over absorption, we deduct the under absorption from our gross profit, or we add under absorption to our cost of sales, right? लेकिन मैंने आपको कहा था ज्यादा बेटर तरीका ये है कि आप इसको cost of sales के अंदर एडजस्ट करें. फिर लास्ट क्लास में हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी जिसके अंदर भी prepared profit statement under the principle of marginal costing. What was that particular example? Product which has a selling price of $50. Direct material is 3 into 4 kg, that is 12. Direct material is a production related variable cost, therefore it will be a part of inventory valuation. Direct labor 45 minutes at $8 per hour, that makes $6 per unit. Direct labor is also a production related cost, and it is also by behavior a variable cost, therefore it will be a part of inventory valuation when preparing profit statement under the principle of marginal costing. Variable production overhead is also a variable cost, and this is also related to production, therefore again it will be a part of inventory valuation. The marginal cost per unit is $20, और marginal cost per unit अगर $20 है तो इसका मतलब हम अपनी marginal cost of production के ऊपर inventory valuation को include करेंगे. Variable sales overhead, despite the fact it is a variable cost, but because it is relating to selling, it will not be a part of inventory valuation. Fixed production overhead, despite the fact it is a production related cost, but by behavior, because it's a fixed cost, it will not be a part of inventory valuation. Fixed admin overheads, एक तो fixed है by behavior, and secondly it is an administrative related cost. It will not be a part of inventory valuation, and same goes for fixed sales overheads. Then we calculated कि $20 पर हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे. हमने फिर एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल कैलकुलेट करना भी सीखा था कि एक्चुअल प्रोडक्शन हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. इट्स एक्चुअली सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू प्रोडक्शन, and production comes to 21,000. Then we move towards the profit statement of marginal costing. Sales, which was 18,000 into 50, 900,000. Total variable cost में हमने cost of sales को adjust किया, जिसमें opening inventory में भी at 400 units, 4,000 units,
And as per the principle of marginal costing, each unit would be valued at $20, that is 80,000. Actual production was 21,000 units, and each unit was valued at $20. As per the principle of marginal costing, it's for 20,000 and minus closing inventory. But contribution निकालने के लिए we not only deduct the variable production cost, we also have to deduct from the sales the variable sales overheads or variable non-production cost. Once we got the contribution, हमने सारी fixed cost को eliminate किया and we got to the amount of profit as per marginal costing. फिर इसी एग्जाम्पल का हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाया था, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने से पहले पहले हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया कि अवर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स. याद रखें, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को यूज करेंगे, कोई और फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी. फिक्स सेलिंग कॉस्ट का रिकवरी रेट कैलकुलेट नहीं होगा, फिक्स एडमिन कॉस्ट का रिकवरी रेट कैलकुलेट नहीं होगा. रिकवरी रेट जो हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें भी ओनली जस्ट टेक इनटू अकाउंट द प्रोडक्शन रिलेटेड फिक्स कॉस्ट. गॉट इट गाइस? तो प्रोडक्शन रिलेटेड फिक्स कॉस्ट के जरिए हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया, दैट वाज $5. और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 20 के अलावा हमने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ $5 भी यूज किया. दैट मींस अंडर द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ईच इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट $25. देन वी कैलकुलेटेड द ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन एज वेल, कि अगर हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन 21 है और हमारा बजटेड प्रोडक्शन लेवल 20,000 यूनिट्स है, तो 1,000 यूनिट्स हमने ओवर प्रोड्यूस किए हैं, और हर यूनिट पे अगर $5 का फिक्स ओवरहेड है तो इसका मतलब 5,000 से ओवर एब्जॉर्प्शन है. या फिर हम लोग 21,000 यूनिट्स इनटू 5, हमने जो फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब की है, चार्ज की है, वो 105,000 है, लेकिन एक्चुअल फिक्स कॉस्ट इज 100,000, देयरफॉर 5,000 इज ओवर एब्जॉर्प्शन. ओवर एब्जॉर्प्शन को हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करेंगे या फिर हम उसको अपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड अप करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर है कि वी नीड टू एडजस्ट दिस थिंग इन आवर ग्रॉस प्रॉफिट. सो व्हेन वी स्टार्टेड दिस थिंग, हमारी सेल्स आ गई, राइट? सेल्स वाज 900,000. कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री multiply by the total cost of production. 25 is the total cost of production. 25 हमारी total cost of production है. इस cost of production के अंदर we have the variable cost of production of $20 and we have a fixed cost of production of $5. तो 20 plus 5, 25 के ऊपर हमने अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू किया, एंड इसमें हमने इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई. We calculated the cost of sales. Right? और cost of sales calculate करने के बाद we got to the amount of unadjusted cost of sales. Now what is unadjusted cost of sales? Unadjusted cost of sales का मतलब क्या है कि अभी तक हमने इसके अंदर ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट परफॉर्म नहीं किया हुआ. ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी रेक्टिफाइड नहीं है, करेक्टेड नहीं है. हमने इसमें देखा था कि हमारे पास ओवर प्रोडक्शन थी, तो ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट हमने यहाँ से माइनस कर दिया टू गेट टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड देन वी रीच टू ग्रॉस प्रॉफिट. नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस की, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल सेल्स ओवरहेड है, फिक्स एडमिन ओवरहेड्स हैं, फिक्स सेल्स ओवरहेड्स हैं. नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इररिस्पेक्टिव कि वो वेरिएबल हो, राइट, या फिर फिक्स्ड हो, हम उसको इंक्लूड करेंगे अपने एक्सपेंसेस के अंदर. कहाँ इंक्लूड करेंगे? हम उनको अपने एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड करेंगे, एंड एक्सपेंसेस में इंक्लूड करने के बाद we deduct these costs from our gross profit to reach to the profit amount, which is 305,000. Now profit as per absorption costing कितना है? Sir, profit as per absorption costing 305 है, और अगर हम यही स्टेटमेंट मार्जिनल के साथ कंपेयर करें तो मार्जिनल का जो स्टेटमेंट है उसका हमारा प्रॉफिट इज 290,000. Right? I will be moving marginal cost statement downwards so that हम उसको करीब करीब रखकर आपस में कंपेयर कर सकें.
So this is profit as per marginal costing, right, guys? Which is 290,000 is profit as per marginal costing. और अगर हम profit as per absorption costing देखें तो that is 305,000. I'll try to do one thing. I can bring both the statements on one page so that we can actually have a good comparison. All right. Okay, leave it, then we can actually stay on the different pages. It's just that okay, the profit under marginal costing is different from profit under absorption costing. Now exams ke andar there is one more concept ke why the profit reported under marginal costing is different from profit reported under absorption costing. Exams में ये question भी आता है. तो आज we will be discussing about why the profit under marginal and absorption are different. And we know this fact कि marginal and absorption का profit different क्यों है? Guys, what is the main reason? What is the main reason why the profit under marginal costing is different from profit under absorption costing? Yes, kids, what do you think? Why the profit under marginal costing is different from profit under absorption costing? Reason kya hai iska? So the reason is the profit under marginal and absorption are different because in both the statements we have used a separate inventory valuation system. Marginal costing ke andar we have valued our inventory only on the variable cost of production, whereas under absorption costing we have valued our inventory on total cost of production. Since we have used different method of inventory valuation, the profit reported under both the system of costing would be different. The time when there are no opening or closing inventories and number of units produced is equal to number of units sold. That means कोई भी अगर हमारे पास leftover inventories नहीं होगी, then you calculate the profit under marginal costing or you calculate the profit under the system of absorption costing. The profit will always be the same. So why the profit is different? What is the reason why the profit under marginal is different from profit under absorption costing? इसका theoretical question आता है 4 marks 5 marks तक का, right? Starting with 3 till 6 marks tak examiner ye question पूछ सकता है. I would be writing the answer of this question, right? And I would be dictating this thing as well. So let's move on. The next requirement, why the profit under marginal costing is different from profit under absorption costing. Explain why the profit under marginal 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 costing is different from profit under absorption costing. Is different from profit under absorption costing. Why the profit under marginal costing is different from profit under absorption costing. The reported profit under the two costing methods. The reported profit under the two costing methods. The reported profit under the two different costing methods. The reported profit under the two different costing methods. Under the two different costing methods would be different. Would be different. Because of the different methods of inventory valuation used. Because of the different method
of inventory valuation used. Because of the different method of inventory valuation used. Under marginal costing, under marginal costing, inventory is valued at variable cost of production. Inventory is valued at variable cost of production because these are internal managerial statements. Because these are internal managerial statements. And for internal management, fixed cost is irrelevant for decision making. Fixed cost is irrelevant for decision making. Therefore, it is considered as a period cost. Therefore, it is considered as a period cost. Therefore, it is considered as a period cost and is written off in the accounting period. And is written off in the accounting period in which it is incurred. And is written off in the accounting period in which it is incurred. In which it is incurred. Whereas under absorption costing, fixed production overheads are part of inventory valuation. Fixed production overheads are part of inventory valuation. And are written off as the units are sold. And are written off as the units are sold. And are written off as the units are sold. So got it, guys? Why the profit under marginal costing and absorption costing is different? Because of the different method of inventory valuation, inventory techniques used, right? Now we will be moving towards the next requirement. The next requirement is normally जब भी profit statements के ऊपर question आता है तो एक और requirement भी examiner पूछता है, and that is कि prepare a reconciliation statement. The profits are different, so reconcile the profit. कि why the profit under marginal costing is different from absorption costing. So to reconcile the profit, we prepare a small reconciliation statement, and we know the fact. The profit under marginal and absorption are different. Why they are different? The reason is because of the inventory valuation. तो अगर हम उस inventory valuation के difference को दोनों statements में से eliminate करेंगे, उस difference को adjust करेंगे, तो we can start walking from profit as per marginal costing and we can reach to profit as per absorption costing. And either way, we can do one more thing. We can start working with absorption costing profit and we can reach to marginal costing profit by adjusting the differences in
inventory valuation. So if we start our reconciliation statement with profit as per marginal costing, profit as per marginal costing, that is MC. MC means marginal costing. Profit as per marginal costing हमने calculate किया हुआ है guys. And what is profit as per marginal costing? The first statement, the profit as per marginal costing is 290,000. We start our statement with 290,000. Now listen everyone. We have to start walking from profit as per marginal costing. And हमें पहुंचना कहां पर है? Where we have to go? We have to reach to a point where we can get a profit as per absorption costing. अब हम कैसे पहुंच सकते हैं? We know the difference between the two statements is just the difference of inventory valuation. Now listen everyone. Marginal costing में हमारी जो opening inventory है 4,000 units, उसको हमने $20 पर वैल्यू किया है. Whereas absorption costing में हमने अपनी opening inventory को 4,000 units into $25, that means variable plus fixed 25 पर वैल्यू किया है. तो marginal costing में opening inventory की वैल्यू 80 है और absorption costing में opening inventory की वैल्यू 100,000 है. The difference between the two statements opening inventory is 20,000. क्योंकि absorption costing की opening inventory 20,000 higher है और जब opening inventory ज्यादा होती है तो cost of sales is also higher and profit is lower. इसका मतलब अगर मैं marginal costing के profit से absorption costing के profit पे जा रहा हूं तो I know this fact कि because absorption costing की opening inventory 20,000 higher है, profit of absorption costing compared to marginal costing would be lower by 20,000. तो जो opening inventory का difference है 180,000 का, that is 20,000, हम उसे अपने marginal costing के profit में से minus करेंगे because we are moving from marginal costing profit to absorption costing profit, and because absorption costing की inventory 20,000 higher है, opening inventory 20,000 higher होने से profit 20,000 क्या होगा? Lower होगा. You can go and see the opening inventory in absorption marginal is 80,000 and under absorption it's 100,000. 100,000 absorption की opening inventory है, marginal की 80,000 है, absorption की opening inventory 20,000 higher है और जब opening inventory ज़्यादा होगी तो eventually हमारा profit कम होगा. Therefore, when walking from marginal costing to absorption costing, difference in opening inventory is deducted. Plus difference in closing inventory. Sir, why are we adding difference in closing inventory? If we go and see कि हमारे पास closing inventory में 7,000 units थे, right guys? और इन 7,000 units को हम लोगों ने marginal costing में $20 पर value किया, that is 140,000. और absorption costing में हमने इन 7,000 units को $25 पर value किया, that is 175,000. तो marginal की opening inventory was how much? Marginal की opening inventory is 140, absorption की opening inventory is 175, closing inventory is 175. That means the difference between the two inventory is 35,000. क्योंकि absorption की closing inventory 35,000 higher है और जब closing inventory ज़्यादा होती है cost of sales कम होता है और जब cost of sales कम है तो eventually profit का amount क्या होगा? ज़्यादा होगा. That's therefore when the closing inventory under absorption is higher compared to marginal, the profit as per absorption would be higher compared to marginal. Therefore, the difference in closing inventory is added when walking from marginal costing profit to absorption costing profit. 175 minus 40, 140, that is 35,000. तो अगर मैं 290 में 20,000 minus करूं और 35,000 add करूं, I reach to a point of 305,000. And what is 305,000? This is my profit as per absorption costing. Got it, guys? क्या हमारा profit as per absorption 305 है? Yes, sir. Profit as per absorption is yes 305,000.
Got it, kids? Any confusion, any problem now? No, sir. We know why the profits are different and how we can prepare a reconciliation statement as well. अब इसी statement को हम other way से भी prepare कर सकते हैं. That means if we start our profit statement with profit as per absorption costing rather than profit as per marginal costing, तो हम opposite treatment follow करेंगे. कैसे करेंगे? Kindly check कर लीजिएगा सब लोग. So starting with profit as per margin absorption costing. If I start my statement with profit as per absorption costing, तो मैं difference in closing inventory को deduct कर दूंगा and difference in opening inventory को add up करूंगा, so I can get to the amount of profit as per MC, which is profit as per marginal costing. So starting with absorption costing, we can also reach towards profit as per marginal costing. Both methods are acceptable, but certain time examiner mention कर देता है starting with marginal costing reach to absorption costing. तो जिस तरह से examiner कहेगा वैसे हम बना सकते हैं. If nothing is mentioned, you can start your reconciliation statement in any other way. So I guess the concept is clear now. कि how the profits under the two systems of costing are different. Now, there are certain few more points which we actually need to remember कि marginal costing and absorption costing के अंदर जो differences हैं उससे कुछ और important points हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रखना है. So we will be making some important points to remember. These are important points. You need to keep these points in your mind. Important points to remember. And what are these important points which you should remember? Number one, profit under marginal and absorption would be same. Profit under marginal and absorption would be same. If there are no opening and closing inventories. If there are no opening and closing inventories. And production equals to sales. अगर जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए उतने हमने सेल आउट कर दिए, हमारे पास कोई ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं है, तो याद रखिएगा एवरीवन, रिमेंबर दिस फैक्ट कि बिकॉज जब इन्वेंटरीज ही नहीं होंगी, डिफरेंट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो आप प्रॉफिट मार्जिनल से कैलकुलेट कर लो या एब्जॉर्प्शन से कैलकुलेट कर लो, द प्रॉफिट अंडर द टू सिस्टम्स वुड बी सेम. The profit under the two systems would be same. You calculate your profit under the principle of marginal costing, or you calculate your profit under the principle of absorption costing. The profit would be same when, sir, when production is equal to sales or when there is no opening or closing inventories. Number two, if opening inventory units are higher than
if opening inventory units are higher than closing inventory units, if opening inventory units are higher than closing inventory units, for example, opening inventory में 5,000 यूनिट्स हैं और क्लोजिंग में सिर्फ 3,000 यूनिट्स हैं, दैट मींस ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स, प्रॉफिट रिपोर्टेड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, profit reported under marginal costing, profit reported under marginal costing would always be higher, would always be higher, would always be higher compared to profit as per absorption costing, compared to profit as per absorption costing, compared to profit as per absorption costing. Sir, why? गाइस अगर ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स ज्यादा हैं तो इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री के कंपैरिजन में रिलेटिवली हायर होगी, और जब ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज आल्सो हायर, तो इवेंचुअली प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वुड बी लोअर and profit as per marginal costing would be higher. Point number 3, if closing inventory units, if closing inventory units, if closing inventory units are higher than opening inventory units, are higher than opening inventory units, are higher than opening inventory units, profit as per absorption costing would be higher compared to profit as per marginal costing. सर क्लोजिंग इन्वेंट्री के अगर यूनिट्स ज्यादा हैं कंपैरेटिव टू ओपनिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट ज्यादा होने से क्लोजिंग इन्वेंट्री की रिलेटिव वैल्यू ओपनिंग इन्वेंट्री के कंपैरिजन में क्या होगी? ज्यादा होगी, हायर होगी, और जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा होती है तो इवेंचुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कम होती है, और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कम होती है तो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। किसका? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। Got it, guys? Now the fourth point, fixed production overhead absorption rate, fixed production overhead absorption rate, fixed production overhead absorption rate can also be calculated as, can also be calculated, can also be calculated as, हमने ऊपर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट करना सीखा था, दैट वाज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन लेवल, बट हम उसी रेट को रिकंसाइल कर सकते हैं या दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द टू प्रॉफिट्स, और वो कैसे हो सकता है? चेंज इन change in profit, or we can say, rather than using the term change, difference in profit, or we can say difference in profit. Which profit? Marginal and absorption profit, ठीक है, divided by difference in opening and closing inventories in unit, divided by difference in opening and closing inventories in units, divided by difference in opening and closing inventory in units. So आप चेक कर सकते हो गाइस,
अगर हम ऊपर जाके देखें व्हाट वाज डिफरेंस इन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। गाइस इफ यू गो एंड सी कि हमारा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कितना था, सर प्रॉफिट एज पर मार्जिनल वाज 290 एंड प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन वाज 305, राइट? 305। तो डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज 15,000। Sir, profit as per absorption is 305. Marginal का profit is 2 divided by opening inventory में we had 4,000 units and closing inventory में we had 7,000 units. The difference कितना है? 7,000 minus 4,000. The difference is 3,000 units. So 305 minus 290 is 15,000. Closing inventory, opening inventory का difference is 3,000 units. And it's $15,000. 15,000 divided by 3. So yes, sir, the overhead absorption rate is $5 per unit, and this was the rate which we calculated earlier as well. तो बताने का पर्पस ये है, इस कैलकुलेशन से हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों प्रॉफिट्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का है। कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने ओवरहेड्स को, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अपने प्रोडक्ट कॉस्ट में एब्जॉर्ब नहीं किया, चार्ज नहीं किया, बल्कि उसको कंप्लीटली एक्सपेंस आउट कर दिया। व्हेयरएज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोगों ने अपनी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को अपनी इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अंदर चार्ज किया है, अप्लाई किया है, रिकॉर्ड किया है, रिकवर किया है। क्लियर है गाइस? अब एग्जाम्स के अंदर होता क्या है सर? एग्जाम्स के अंदर व्हाट हैपेंड इज, एग्जाम्स के अंदर स्पेशली एमसीक्यूज के अंदर भी ये चीजें आती हैं कि आपको सपोज एग्जामिनर कह दे कि प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग इज 20,000, एग्जाम्पल है ये, ठीक है? आपको बताया प्रॉफिट एज पर एमसी कि सर प्रॉफिट एज पर एमसी समझ गए ना बेटा? व्हाट डज एमसी मींस? एमसी का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग का 290,000 है। Examiner के opening inventory is 3,000 units and closing inventory is 7,000 units. और examiner कहे कि overhead absorption rate is $5 per unit. OAR, overhead absorption rate is $5 per unit. And examiner कहे calculate profit as per absorption costing. Calculate क्या करना है? Profit as per absorption costing. MCQs में इस तरह की चीज आती है ना। हम इसी ऊपर वाली कैलकुलेशन को, ऊपर वाली जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, चेंज या डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी इन यूनिट्स इक्वल्स टू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, उसी में पुट करेंगे। हमें प्रॉफिट एज पर एमसी तो पता है, लेकिन प्रॉफिट एज पर एसी नहीं पता, तो डिफरेंस हमारा क्या है? अननोन है। डिफरेंस इन प्रॉफिट इज अननोन। divided by difference in opening and closing inventories, 7,000 minus 3,000, 4,000. So opening inventory आपने 4,000 है, ठीक है? It's 4,000 and closing was 7. The difference is what? 7,000 minus 4,000, that is 3,000, equals to overhead absorption rate. And what is overhead absorption rate? That's 5. So now अगर मैं इसको calculate करूं तो I can calculate 5 multiplied by 7 minus 4, that is 3,000. 5 into 3,000, difference in profit मेरे पास आ गया कितना? 15,000. कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 15,000.
Now the problem is कि सर डिफरेंस हायर साइड पर है लोअर साइड पर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो वी नो दिस ट्रिक कि जब ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है एमसी का प्रॉफिट ज्यादा होता है, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है एसी दैट मींस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होता है? ज्यादा होता है। अब हमने देखा यहाँ पर कि यार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री कम है और क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट ज्यादा है, इसका मतलब जो भी मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में 15,000 का डिफरेंस है। एंड ऑब्वियसली अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट ज्यादा हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अगर मार्जिनल का प्रॉफिट 290 है एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट इज 15,000, तो व्हाट इज गोइंग टू बी प्रॉफिट एज पर एसी? हम प्रॉफिट एज पर एसी निकाल सकते हैं। दैट मींस एसी डिफरेंस को हमें क्या करना होगा? एड अप करना होगा। और अगर सर क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कम होते, ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट ज्यादा होते, तो हमें पता होता कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है एब्जॉर्प्शन का कम, फिर उस डिफरेंस को हम क्या कर लेते? माइनस कर देते। So, are we clear on everything what we have discussed in today's class? Uh, ये सारी चीजों को एक दफा प्लीज रिव्यू कर लीजिएगा। यू विल बी गेटिंग द नोट्स, यू हैव द वीडियो एज वेल। एंड गाइस ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट, these are actually the last month। so last months के अंदर हम नॉर्मली करते क्या है कि we have a revision classes as well, लेकिन obviously due to this corona circumstances we are unable to conduct our normal classes, तो revision तो बहुत दूर की बात है। but you can do one thing कि in alternative classes I'm teaching alternative lessons, right? आज मैं single NTV class भी लूंगा। I will be teaching एक और टॉपिक भी, लेकिन अभी तक आपने स्टडी नहीं किया तो लेकिन जो कर लिए टॉपिक्स उनकी आप रिवीजन सेशंस भी ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द ऑनलाइन सेशन, just go through the videos which is being posted on YouTube के ऊपर वो videos हैं। I know I even don't like this stuff, right? I even don't like this stuff, right? That watching the screen and videos, obviously it becomes a little boring, but anything is possible now because we don't know since how long the school is gonna be closed, ठीक है? तो आप उन revision sessions को भी go through कर सकते हो by visiting the YouTube channel, right? The videos are available over there. Subscribe to the channel and you can have so much informative videos for you. So before we end our class, we will be having few question answer sessions now. All right, kids. So let's pop up with the questions. Let's see, you can use your chat bar, and if you need an access to the mic, I can give you the access to the mic so that you can actually speak up if you're not able to write it down. So we have few questions we'll read out, but if you have any queries, just raise your hands. I will be giving you the mic access. Sir, is opening inventory absorption is always higher than marginal? Yes, definitely. क्योंकि मार्जिनल के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट है और एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों है। तो किसी भी सिचुएशन के अंदर मार्जिनल के कंपैरिजन में एब्जॉर्प्शन की ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी दोनों क्या होगी? ज्यादा होगी। सर दूसरे मेथड में चेंज क्यों कर दिया कि ओपनिंग प्लस हो गई और क्लोजिंग माइनस? और बेसिकली जब हम ऑल्टरनेटिव बेसिस पे जाते हैं हम बैकवर्ड वर्किंग कर रहे होते हैं। जब मैं मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन पे जा रहा हूं तो आई नो दिस फैक्ट कि मार्जिनल की ओपनिंग इन्वेंटरी या मार्जिनल में अगर से फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन पे जा रहा हूं तो आई नो दिस फैक्ट कि ओपनिंग इन्वेंटरी ज्यादा होने की वजह से मार्जिनल का प्रॉफिट, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम है, मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा है। तो हम जब मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन पे जाते हैं तो हम डिफरेंस इन ओपनिंग इन्वेंटरी को माइनस करते हैं, डिफरेंस इन क्लोजिंग इन्वेंटरी को एड अप करते हैं टू रीच टू प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बट वही चीज जब मैं ऑल्टरनेटिव तरीके से करूंगा, बैकवर्ड वर्किंग पे जाऊंगा, तो गाइस प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन से जब मार्जिनल पे जाना होगा तो डिफरेंस इन क्लोजिंग इन्वेंटरी को माइनस करेंगे, ओपनिंग इन्वेंटरी को एड अप करके प्रॉफिट एज पर एमसी कैलकुलेट कर सकते हैं। Sir, can you show the answer why the profit of marginal and absorption costing is different? The profits are different because of the different method of inventory valuation used. Marginal में हमने अपनी इन्वेंट्री को $20 पर वैल्यू किया था, that was the variable cost of production. Absorption में हमने अपनी इन्वेंट्री को 20 plus 5 25 पर वैल्यू किया था, that was the total cost of production.
Sir, if we have to calculate the profit and we don't have the inventories, we would still find the OAR and then subscribe the sir, अगर आपके पास inventories नहीं है, आपकी मर्जी, आप variable production overhead करी, fixed production overhead recovery rate निकालें, या फिर direct material, direct labor, variable production overhead, fixed production overhead सबको एक साथ minus कर दें, you will still get the same answer. क्योंकि जब inventories ही नहीं है तो inventory valuation को करने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन अगर एग्जामिनर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन देगा गाइस, तो उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरीज में कुछ ना कुछ जरूर होगा. ओपनिंग इन्वेंटरी अगर जीरो होगी तो देयर वुड बी समथिंग इन क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी जीरो होगी तो देयर वुड बी समथिंग इन ओपनिंग इन्वेंटरी. अदरवाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट्स करवाने का फायदा ही नहीं है, बिकॉज द एग्जामिनर वांट्स यू टू नो द डिफरेंस ऑफ द टू डिफरेंट इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड. कि मार्जिनल का और एब्जॉर्प्शन का जो प्रॉफिट डिफरेंट है वो इसलिए है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन यूज्ड. जरूरी नहीं है बेटा, you can do it any other way. So if you have any other questions, if you have any problems, just raise your hands, guys. You can raise your hands and I can give you the access of the mic as well, right? Anyone guys, if you need any assistance, if you need to speak up, just raise your hands. Just raise your hands. Arisha, you need to ask any question, beta. Guys, no sir. All right, so let's end the session. I would be what you need to do is do one more thing, guys. Just go and solve the last question in your section B. The last question in your section B, last and second last question आप लोग solve कर लें. Those are relating to profit statement. मैं कल कुछ questions खुद से आप लोगों को solve करवाऊंगा profit statement के. Not tomorrow. Tomorrow is Friday. We might be having our session on Saturday or Sunday. I'll let you know, but not in the morning slot. हम थोड़ा late रख सकते हैं Saturdays and Sundays को. So Saturday and Sundays को we'll be having one of the slot. Not probably on Sunday, but on Saturday surely. See you guys and best of luck. Keep working hard. And अगर आप possible हो, I'm not sure सीधे shop open है या नहीं. Probably आप लोगों के past papers आ गए होंगे. You can go and pick the past papers and start solving the yearly past papers now. Take care everyone.